टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि हम किचन इंग्रेडिएंट्स जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं उनको यूज़ करके मैं कुछ कलर्स बनाने की ट्राई करूँगी और लेट्स सी कि क्या रिज़ल्ट आता है उसको फैब्रिक में डाई करने के बाद। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स गो टू आवर किचन। वेलकम टू माय किचन। तो मैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट हल्दी पाउडर, चाय पत्ती, कॉफ़ी पाउडर, बीटरूट, पालक। सो लेट्स सी इन सब का कलर बनाने के बाद फैब्रिक पे कैसा रिजल्ट आता है। कॉफ़ी, चाय जो मैंने बॉईल कर ली है, पालक और बीटरूट को ब्लेंड कर दिया है। अब हम फैब्रिक को डाई कर लेंगे। इसे ऐसे ही रहने देंगे आधे घंटे के लिए। सो 30 मिनट्स हो गए हैं तो हम फैब्रिक को हम कलर में से निकाल कर देख लेते हैं। कॉफ़ी, चाय, बीटरूट, पालक. That's it for today. I hope you like my small DIY making colors using kitchen ingredient. If you like it, hit the like button, and if you try all this, then tag me on Instagram, link in the description box, and do subscribe my channel, and I will see you in the next one. Bye.